revise a topic which is very important as far as your syllabus is concerned. This is a topic that is transportation in case of the animals and plants. अब जो चीज समझने वाली है वो ये है कि क्या ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स और प्लांट्स में. So we need to remember कि कुछ चीजें हैं जो यूजफुल हैं which need to be transported to the entire body, and there are certain substances which are harmful which need to be released and thrown out of the body. तो ये सारा जो है this comes under transportation. अब इसके अंदर mainly two systems हैं. The first is your circulatory system and second is your excretory system. Coming to the first, that is the circulatory system, we need to understand कि इसमें क्या हो रहा है. इसमें blood circulate कर रहा है और ये जो blood circulate कर रहा है this is because of certain organs. That is the heart, which is the main pumping organ of your body. It is made up of muscles और ये जो muscles हैं ये contract करते हैं, relax करते हैं. तो जो इसके अंदर heart के अंदर blood है that is pushed forward and it goes to the different organs of the body. Now coming to the next part of your circulatory system are the blood vessels. ये जो blood vessels हैं these are the tubes or these are the vessels which are carrying the blood away from the heart and to the heart. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह की blood vessels होती हैं and what is their function and how are they different. So अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह की blood vessels होती हैं और उनका क्या function है, उनकी location क्या है and how are they different. And then we have finally the blood, and we will also study about the composition of blood. Now students, we need to remember one thing, like I have drawn this diagram here कि heart जो है it is made up of 4 chambers, 1, 2, 3 and 4. जो ऊपर वाले 2 chambers हैं इनको हम कैसे याद रखेंगे कि इनका नाम क्या है. Always remember कि जब हम ABC बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, A आता है, फिर उसके बाद में B आता है. So just remember कि A जो पहले आता है वो ऊपर है और जो B बाद में आता है ABC बोलने के टाइम में वो ventricles नीचे हैं. So the upper chambers are known as the atrium or they are known as the auricles और वहां से blood कहाँ पे आ रहा है, in the lower chambers which are known as the ventricles. So 2 auricles हैं और 2 ventricles हैं और ये जो blood आगे जा रहा है वो वापस ना जाए इसलिए उसमें क्या है, valves. तो V से वापस, V से valves. तो valves क्या रोकते हैं, blood का वापस जाना रोकते हैं so that it does not flow in the opposite direction or the backward flow of the blood. Now coming back to this, we need to remember one thing कि ये जो heart है इसकी right side जो है that is actually dealing with the wrong blood. Wrong blood I mean that is the blood which is rich in carbon dioxide. So there is a blood which is rich in carbon dioxide. तो ये वाला जो blood है that is being dealt with on the right hand side और जो अच्छा blood है, जो ठीक चीज है वो कहाँ पे है, that is on the left side. Now we need to know कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है ब्लड में, ये ऑक्सीजन आ रही है लंग्स में से. So we are breathing, we are taking an oxygen rich air जो ब्लड में डिसॉल्व हो रही है and that blood now comes to this heart. हार्ट के किस चैम्बर में आ रहा है, एट्रियम में आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है और उसके बाद में कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू द वेंट्रिकल्स. वापस ना जाए इसलिए मैंने आपको बताया कि उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, which are known as the valves. So they are like the gates जो सिर्फ आगे की तरफ खुलते हैं और उसके बाद में ब्लड को पीछे नहीं आने देते, उसके बाद वो बंद हो जाते हैं and the blood cannot flow back. और जो हार्ट के चेम्बर्स हैं ताकि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स ना हो, सो देयर इज अ पार्टीशन व्हिच इज नोन एज सेप्टम. ठीक है, दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ 7th क्लास बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी नीड टू रिमेंबर कि ये जो हार्ट है हमारा, इसके केस में क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर हार्ट. Now we need to remember one thing कि ये जो आपका हार्ट है इसमें जो ब्लड है इसने नीचे से जाना है, तो कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो लेके जा रही हैं हार्ट नीचे से, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो प्योर ब्लड लेके जा रही हैं, दैट इज द अयोटा. अब ये जो अयोटा है, जस्ट रिमेंबर अयोटा इज अ आर्टरी. सो स्टार्टिंग विद ए, रिमेंबर कि जितनी भी आर्टरीज हैं दे आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. आर्टरी आल्सो स्टार्ट्स विद ए, अवे आल्सो स्टार्ट्स विद ए. So just remember one thing कि जितनी भी arteries हैं they are taking blood away from the heart and they are taking the blood to the different organs. So arteries का काम क्या है, they are taking blood from the heart to the organs. जब ये organs के पास लेके जाती हैं blood, तो ये वाला blood क्या है, this is oxygen rich blood. These organs after respiration, after the combustion of the food, they are going to release what is known as the carbon dioxide, and this carbon dioxide is finally going to come back to the heart and now it is going to come back to the right side of the heart. So ये जो right side में आएगा that is the deoxygenated blood. So ये वापस कौन लेके आ रहा है, V से वापस, V से veins.
तो ये जो है दिस इज नाउ बीइंग कैरीड विद द हेल्प ऑफ द वेन्स, और एक जो मेन वेन है दैट इज नोन एज द वेना केवा. Now these veins are carrying the impure blood. So this carbon dioxide is being carried by these veins, और ये जो veins हैं ये किस साइड आ रही हैं? राइट साइड में, क्योंकि मैंने आपको बोला है राइट साइड ऑफ द हार्ट इज डीलिंग विद द रॉन्ग ब्लड. रॉन्ग ब्लड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस द ब्लड व्हिच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये वापस इसमें से अभी आएगा राइट एट्रियम में, उसके बाद में इट विल गो टू द ventricle, and from here, from this ventricle, it will go to the lungs. Now coming from here, it is now going to the lungs. So this carbon dioxide, when it reaches back to the lungs are going to throw this carbon dioxide out through the process of respiration. So I hope this much is clear. Just a small recap. There are 4 chambers in case of the heart. ऊपर वालों को हम ऑरिकल्स बोलते हैं या एट्रियम बोलते हैं, नीचे वालों को हम वेंट्रिकल बोलते हैं. जो राइट साइड है हार्ट की दैट इज डीलिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो लेफ्ट साइड है दैट इज डीलिंग विद द ऑक्सीजन रिच ब्लड. ये ऑक्सीजन रिच ब्लड विद द हेल्प ऑफ द आर्टरीज, एंड द मेन आर्टरी इज नोन एज द aorta. इट इज बीइंग कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन्स. ये जो ऑर्गन्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं, which comes back with the help of this vein or the vena cava. It comes back to the right side of the heart. फिर ऑरिकल्स हो गए, मतलब एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया. इट गोज टू द लंग, एंड देन फाइनली फ्रॉम द लंग्स it is excreted out or it is thrown out. So this is the process of circulation. I hope this much is clear. Up now we need to understand the difference between the arteries and the veins. पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो arteries हैं और ये veins, we can make a small table to compare the two. So arteries जो हैं they are carrying the blood away from the heart. They are carrying blood to the heart. To the heart. जो arteries हैं they are carrying the oxygen rich blood, veins are carrying the carbon dioxide rich blood. अब जो arteries हैं क्योंकि वो हार्ट में से लेके जा रही हैं ब्लड, so the blood is under lot of pressure. इसलिए arteries जो हैं वो बहुत thick walled होती हैं. So we need to remember that these are thick walled. They have got thick walls. But जब blood वापस आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो हार्ट की तरफ जा रहा है तो बेचारा थक जाता है, उसका दिल नहीं कर रहा हार्ट के पास वापस जाने का, तो इसलिए क्या है, इट इज अंडर लो प्रेशर. सो इट जस्ट कम्स हियर ऑन दिस साइड, एंड नाउ द आइडिया इज कि वो ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए. तो वेन्स में क्या होता है, वेन्स में वॉल्स होते हैं. सो दिस इज पहली चीज, दिस इज थिन वॉल्ड एज कंपेयर टू द आर्टरीज व्हिच आर थिक वॉल्ड. दूसरी चीज, इसके अंदर वॉल्स होते हैं, इसमें वॉल्स नहीं होते. वॉल्स इसलिए होते हैं क्योंकि ब्लड जो है वो वापस नहीं जाना चाहिए. देयर शुड बी नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड बैक टू द ऑर्गन्स. सो ब्लड हैज जस्ट टू बी पुश्ड टू बी मूव टुवर्ड्स द हार्ट. इट इज गोइंग बैक टू द हार्ट. नाउ कमिंग टू दिस, वी नीड टू रिमेंबर कि कैसे याद रखेंगे इसको. वी से वेन्स, वी से वॉल्स, वी से वापस. तो जो ब्लड वापस आ रहा है वो किस में आ रहा है, वेन्स में आ रहा है, और वेन्स में क्या है, V से walls हैं. So everything is with V. This is how we remember it. Now coming to the next is, because these veins are just carrying the blood under low pressure, thin walls हैं इनकी, तो we can see them superficially. They are not very deep seated. So these are superficial, and this is deep seated. Why? Because the blood is flowing under lot of pressure, so they can even burst. So now I hope the difference between the arteries and the veins is clear to all of you. Just remember students, अगर question आपको आता है, give one difference, then you will just combine one or two of these and give. For example, you will say that the arteries, these are the blood vessels which are carrying the blood or which are carrying the pure blood away from the heart to different organs of the body. Veins, these are the blood vessels which are carrying the blood from the organs to the heart, and it is the deoxygenated blood. So these are some of the differences. In case they say give differences, then you will give all these differences but in sentence form. Table form but full sentences. You will not be writing these signs like I have written. I hope you understand all this. We have discussed the heart, we have discussed the blood vessels, and now we need to discuss the blood and the composition of blood. Always remember students that blood is having the components like RBCs, WBCs, blood platelets, and ये सारे किसमें हैं, ये जो blood cells हैं ये किसमें हैं,
they are all floating in the plasma. किसमें है? प्लाज्मा में है. So this is your RBCs, means red blood cells और red blood corpuscles. और ये रेड क्यों है? इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन. This is how we break the word and we learn the spellings. So ये जो हेमोग्लोबिन है, this is actually giving it the red color and it combines with the oxygen. तो हम ये समझेंगे, for example, you can think कि hemoglobin is like a bus and it has got many seats. जितनी ज़्यादा seats, it means उतनी ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन बैठ सकती है, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बैठेगी उतना आपका हेमोग्लोबिन बेटर होगा, उतनी आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल बेटर होगा. और फॉर एग्जांपल अब किसी बस में सीट्स कम हैं तो नेचुरली उसमें ऑक्सीजन कम बैठेगी एंड सच पीपल आर नोन एज एनीमिक एंड दे गेट टायर्ड वेरी इजीली, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं रही. So this is what we need to understand. So coming to the next is your WBCs. Remember, WBCs are white blood cells. It means they are not having that red color. और इनका function क्या है? इनका function है basically to kill the germs that enter the body. So they are the soldiers of our body. The next is your platelets. Now, for example, आपकी body में cut लग गया and the body starts bleeding. अगर कोई चीज ना हो कि वो ब्लड फ्लो रुक जाए तो क्या होगा? आपका ब्लड फ्लो करता रहेगा एंड फाइनली व्हाट विल हैपन? इवन डेथ कैन अकर. सो इट इज वेरी फेटल. तो ब्लड को तो रोकना बहुत जरूरी है. सो अब हम क्या करते हैं, कैसे इसको रोका जाता है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लड प्लेटलेट्स. ये दीज ब्लड प्लेटलेट्स आर दोज सेल्स ऑफ द ब्लड व्हिच आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट. आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कट लग जाता है और आपकी बॉडी ब्लीड करने लगती है, तो थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पे हार्ड हो जाता है एंड ड्राई हो जाता है ब्लड. सो वो ब्लड ड्राई क्या है? दैट इज एक्चुअली अ ब्लड क्लॉट विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्लेटलेट्स. सो दे डू नॉट अलाउ द एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ द बॉडी. सो दिस completes your complete circulatory system. Now coming to the next system which is concerned with the transportation is the one which is concerned with the transportation of harmful substances. अब जो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, उसके करके certain waste materials are produced, nitrogenous waste etc are produced, so they have to be thrown out of the body. अब आपने देखा होगा हम अपने घर के अंदर भी कचरा नहीं रखते हैं. That also we throw on regular basis. अगर हम नहीं करते हैं तो घर के अंदर स्मेल आने लगती है. It is not very hygienic, it is not very healthy for us. सेम वे अगर बॉडी के अंदर हमारे कुछ कचरा है जो टॉक्सिक है, जो पॉइजनस है, वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाई इज एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट, तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्रीशन हेल्प्स अस टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स इन आवर बॉडी व्हिच कैन बी टॉक्सिक एंड दे कैन हार्म आवर बॉडी. ठीक है, तो एक्सक्रीशन इसलिए जरूरी है. और एक्सक्रीशन होती क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. दीज टू डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अब जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 2 किडनीज, 2 ureters. Ureters are the pipes which are carrying the urine to the urinary bladder, जहाँ पे वो temporary store होता है before it is released or thrown out of the body from the urinary opening. Urethra is a small passage and then it is finally coming out of the urinary opening. So this is your excretory system. Now the thing that is very important for us to remember is that the urine that which is being passed out of the body has a composition that it has got mainly 95% of water is there, 2.5% is urea and 2.5% are the salts. So this is the composition of the urine. Now we need to remember कि कई बारी जो हमारी किडनीज हैं जिनका मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, जिससे ये सारा यूरिन फॉर्मेशन होता है, इट इज थ्रोन ऑफ द बॉडी. Sometimes these kidneys are damaged, तो ये properly function नहीं करती. तो फिर हम क्या करते हैं from a medical science or how do we help them is there is a process which is known as dialysis. So this is a process by which the filtration of the blood is carried out in such patients. So this is as far as the excretory system in case of the animals is concerned. Now we need to come to the transportation in case of the plants. So for plants we need to remember one thing. दैट इसके अंदर क्या है? 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है. फर्स्ट इज वाटर एंड सेकंड इज फूड. वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज अ टिश्यू व्हिच इज नोन एज xylem एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए देयर इज अनदर टिश्यू व्हिच इज नोन एज phloem. अब इनको याद कैसे रखना है? फर्स्टली यू नीड टू रिमेंबर दैट दीज आर नोन एज द वैस्कुलर टिश्यूज. ये जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं, these are made of 2 types. First is the xylem and then we have the phloem.
सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैं जाइलम का x जो है उसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूं तो क्या बन गया, then it becomes W. So remember जो जाइलम है that is transporting water and phloem जो है साउंड क्या आ रही है फ की, तो फ से phloem, फ से food, फ से photosynthesis, तो phloem क्या कंडक्ट कर रहा है food. So another thing we need to remember is कि food जो बन रहा है वो leaves में बन रहा है. Leaves food has to be transported to all parts of the plant. तो transportation है वो ऊपर की डायरेक्शन में भी है, नीचे की डायरेक्शन में भी है. So हम क्या बोलेंगे जो phloem है इसमें transportation कहाँ हो रही है? It is in both the directions. जो पानी है that is being absorbed from the soil with the help of the roots and it has to just come up. अब ये जो पानी है जो ऊपर आ रहा है this will be distributed to all parts of the plant. Sometimes what happens when we are coming to the excretion in case of the plants, we need to remember कि इसमें दो चीजें excrete होती हैं mainly. One is say carbon dioxide हो गई, which is the excretory product when the plants are respiring. दूसरी चीज क्या है exchange of the gas? अगर ऑक्सीजन है, which is the end product of the photosynthesis, तो ऑक्सीजन निकल रही है. And otherwise sometimes because roots पानी absorb करती जा रही हैं, प्लांट के अंदर ज्यादा पानी हो गया, एक्सेस पानी हो गया, it has to be got rid of. तो आपने देखा होगा छोटे छोटे water drops they are sometimes seen on the edges of the leaves. So that is what is known as transpiration. When there is water loss in the plant in the form of water vapor, then it is known as transpiration. So ये जो gases निकल रही हैं प्लांट में से या जो exchange हो रही हैं या excess water का जो loss हो रहा है, this is through small openings and these small openings we all know are stomata which are there in case of the leaves. Now what we need to remember कि जब excess पानी जो है वो lose हो रहा है तो जो ट्री के बिल्कुल ऊपर वाली लीव्स है उनमें से भी पानी का लॉस हो रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया, ऊपर पानी अब कम हो गया, जमीन में पानी ज्यादा है. सो अ सक्शन पुल इज क्रिएटेड जिससे जमीन में से पानी ऊपर खींच के चला जाता है एंड इट कैन रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ ट्रीज. तो पानी पूरा ऊपर तक जाता है. ऐसी पुल को विच इज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल. Now we need to remember कि सिर्फ ये gases या extra water जो है सिर्फ यही excrete नहीं हो रहा. There are other substances which are also excreted from the surface of the plant and they can be in the form of the gums, tannins, resins. All these are excreted from the plant body. So just remember these things that xylem is transporting water, phloem is transporting food, first say phloem, first say food, and जो उनका substances are being excreted, they are excreted through the stomata. So these are certain important points which you need to remember as far as the plants are concerned. So students, this finishes your chapter transportation in case of the plants and animals, or transportation in case of the animals which we studied earlier and now we have studied in case of the plants. So I hope all the concepts are clear now. Any doubts you can always put in the comment box. And now students, stay tuned to my channel for the upcoming video which will be in our next chapter, that is the reproduction in case of plants. So all the best students for all the upcoming exams. God bless you.